अच्छा, आज पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड का एक डेलीगेशन आया हुआ था। ऑब्वियसली उसमें उसके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो उनकी जो मुलाकात हुई है अपेरेंटली वो हुई है नथिया गली के अंदर। नथिया गली के अंदर उनकी मीटिंग हुई है। तो तो ये एक क्लिप है जो कि पीएमएलएन वालों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालों ने इसको रिलीज किया सोशल मीडिया के ऊपर। इसके ऊपर काफी लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि बहुत एज यूजुअल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनयूजुअल हरकतें कर रहे हैं इस क्लिप के अंदर। तो आपने देखे वो क्लिप इब्राहिम? Should we show that clip first before we talk about this? मैंने I think देखा है और मतलब आई थिंक okay, what we're going to do is we're going to show this clip ताकि सारों को पता चल जाए कि वो क्लिप क्या है। तो I'm going to put that on a big screen, ठीक है? Okay, let's start this. Built by British Raj during their time and during undivided India, and it's been maintained by Pakistan very well. And look at the landscape; it's almost 100 years old building. 1923. Stehen Sie hier, schlafen Sie hier, essen Sie hier. Das ist richtig. Ja? Ja? Gut. Und auch Chennai. Gibt's auch hier. Ja, ja. Das ist das ultimative Argument. Thank you very much for your favor. Und es ist sehr schön bei Ihnen hier. Ja? Seit zu Pakistan, noch nach Pakistan. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen und sehen Sie später. Ja? Genug. 100%. Mit meinen Freunden. Herren und Damen, ja? Schönes Zeit hier. Thank you very much. Ich habe in Genf versprochen, nach Pakistan zu kommen. Ich bin gekommen. Das erste Mal, aber nicht das letzte. Vielen Dank. Und vielleicht nach 2 Monaten, ich würde be Detroit, ja? Wunderbar. Wir fliegen, ja. Dann können wir uns wieder sehen. Vielen Dank und sehen Sie später. Auf Wiedersehen. Ja? Wiedersehen. Aber das is something where in the German speaking part of Switzerland in the mountains, where the ladies were able to cut the stuff or the paper and to make out of them wonderful pictures of the mountains. So you can hang it on a wall, and it is really very, very. अच्छा जी इब्राहिम। तो ऑब्वियसली ये स्विट्जरलैंड का से आए हुए थे। ऑब्वियसली इनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे इसमें। आपको आवाज आ रही है इब्राहिम? speaking German though. या लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि पीएमएलएन ने they were speaking German, right? Yeah. Yeah, okay. They And were speaking I think what's language? स्विट्जरलैंड में हाँ जर्मन भी बोली जाती है। Yeah, so that's what I thought कि उधर जो है वो मे बी एज अ सेकंड लैंग्वेज जो है ना, क्योंकि स्विस उनकी तो अपनी लैंग्वेज है ना, राइट? इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा, एनीवेज, तो इसके अंदर मुझे तो ऑब्वियसली आप इब्राहिम को मैंने इस वीडियो के लिए अंदर इसलिए लिया क्योंकि इब्राहिम ने थोड़ा सा टाइम जर्मनी में स्पेंड किया है, तो मे बी ही अंडरस्टैंड्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि नून लीग का जो सोशल मीडिया है उन्होंने इसको ऐसे बना के पेश किया है कि जो शहबाज शरीफ है बहुत फ्लुएंट जर्मन बोलते हैं और अपेरेंटली वो सबको शॉक के अंदर डाल दिया है उनके इस कैप्शन के मुताबिक। और फिर जो दूसरी मुझे अनयूजुअल चीज इसके अंदर नजर आई है वो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है ना, यानी कि जो बात करते हैं ना स्पेस के डिस्टेंस का जो है ना वो बड़ा ख्याल रखा जाता है। यानी कि वो यहाँ पर लोग पसंद नहीं करते कि आप उनको टच कर रहे हो अननेसेसरीली, और अगर आप हैंडशेक भी करते हैं तो इधर आपने देखा होगा कि वो पहले जो फॉरेन मिनिस्टर का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर खातून का, यानी कि खातून का आप देख सकते हैं शी फेल्ट काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल कि जी वो बंदा हाथ पकड़ के खड़ा हो गया और वो थोड़ा सा ना उसको पीछे करने की भी कोशिश कर रही थी। तो मैं एक बड़े टिपिकल सा है कि इस तरह के होते हैं चिपको अंकल यहाँ पे।
जो यार ये you know, I पाकिस्तान think में they make हाँ, everyone feel uncomfortable. इसी तरह ये yeah. बड़ी typical scene की हुई है performance है. हाँ नहीं लेकिन यार देखें आप जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको जो है ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने लोगों के साथ बात करनी है। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी कि हम सब के लिए भी बड़ा एम्बैरेसिंग है जिस तरीके से ये अपने आप को कैरी करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और ये पहली दफा नहीं है, ये इनकी पहले भी इस तरह की बहुत ज्यादा क्लिप्स आ चुके हैं जिसमें वो लोग पकड़ के खड़े हो जाते हैं और लोग ऐसा लगता है कि जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो ये अपनी तरफ से शायद वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह ही होता है ना, पाकिस्तान में आप लोगों को देखेंगे वो बड़े मीठे, जो जितने आपके साथ मीठा बनते हैं ना, वो मीठा बन के ना आपको जरा वो जो फंसाने के तरीके नहीं होते आप बहुत फंसाने ज्यादा मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को you don't understand the man. He's a performer, Adil. He's a यार देखे नहीं he's an entertainer. He इब्राहिम बात पता है क्या है, बात ये है कि देखें वो लोकल लेवल के ऊपर आपकी मे बी इस तरह की सिली जो हरकतें हैं वो काम कर जाती होंगी। आई डोंट थिंक कि आप ये जो इंटरनेशनल डेलीगेशन आपके कंट्री में विजिट करने आई हुई है आप इनको इस तरीके से फंसा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा के, राइट? तो इब्राहिम I'll ask you कि आपने अच्छा, obviously पूरा okay, क्लिप so देखा आपका। yeah, so when I saw it, my German, when I spent a very little time in Germany and I had picked it up quite a bit, लेकिन बहुत rusty है मेरी German. So when I watched it the first time, एक दो जगह I heard him throwing out जो common वो नहीं होते phrases of either and ये वो, तो I was like अच्छा यहाँ तो he's just recycling, but there's so many different, if you watch it, you feel like at least the guy's done some beginner course or something, that he's managing something, and I couldn't. I was very confused, and और मैं सोच रहा था ये जर्मन और अंग्रेजी मिक्स करके बोल रहे हैं या क्या कुछ समझ इसकी नहीं आ रही. So what I did was I got in touch with a friend in Germany who's very very fluent in German, and I sent this video to him and I asked him, can you please translate for me what is being said. So he said कि यार ये बंदा जो है इसकी German काफी बुरी है. I found some of his comments very entertaining, so I will also read directly from it. He said ये comedy की तरह है और वो बेचारे जो हैं वो मजबूरन yes कर रहे हैं. पहले बंदे को कहता है schlafen Sie gut, essen Sie gut, es ist sehr richtig. वो शुरू में नहीं हुआ है. So I mean my German is also really bad, but what he's saying initially to that guy, वो कैमरा उस बंदे के ऊपर होता है और ये बड़ा पैशनेटली उसका हाथ वो शेक कर रहा होता है. So what he's saying to him is sleep well, eat well, it is very important. That is what he says to that. ठीक है. Then what he does is after that he says to this man, Zied zu Pakistan nach Pakistan vielen Sie Dank, which he says he wanted to say thank you for your time in Pakistan, but what he said was time to Pakistan, many you thanks. That is what he said, and he's assuming that what he was trying to say was, thank you for taking time out to visit Pakistan. But जो उसने कहा उसका literal वो है translation है time to Pakistan, many you thanks. And he says, look at her face when he says it. According to him, he says she looks like, she's thinking, what the F are you saying? Then he says, auf Wiedersehen, which means, goodbye. Then he says, sehen Sie später. That's see you later in German. That's a pretty common phrase. And it's also grammatically incorrect. He should say, we will see each other later, which is said differently. But what he says, उसका मतलब निकलता है, you will see later. ठीक है? Then he says genug. I think he wants to say genau, which is like exactly or perfect in German, but he says genug, which means enough. That's it, enough. And then he said 100% mit mein Freund Herren and Damon. That's what he said. जो मैं बहुत confused हुआ क्योंकि वो जिस तरह हाथ वो कर रहा था, तो I was like, is he trying to introduce his wife really badly by calling her Herren and Damon? So, but the translation to that is 100% we will see each other again. 100% with all the friends here who have joined you, something like that. Yeah, I think that's what he's trying to say, but what he says translates to 100% with my friend, man and woman. That's what that. So yeah, Heron and Damon, Joanna, you basically, and again, I might be pronouncing this
incorrectly, but that's what it says on toilets, वहाँ पे, you know. Wow. In the men's toilet, it says Herren and on. खैर, फिर वो कहता है mit meinen Freunden कहना होता है, पर उनका level जरा नीचे है. So, अच्छा, then he says Schwanz, which means he's trying to say something else, but he says this word, which means penis. And then What? he realizes, yes, that's what I Are was you laughing at. What? I'm serious. This is not, this is, you know, the person who was translating it from German for me told me that he said Schwanz, which means, you know, a penis. And then he realized it was wrong. He said Schöne, which means nice. Oh my goodness. He says Schwanz can also mean tail, but usually it is referred to, you know, the word said above. अच्छा नहीं इब्राहिम यार ये अच्छा और I'll let you finish first. Go ahead, please. Acha, he says, the German guy says, I promised you that I will come, and this is the first time, but it is not the last time. And then the PM's voice is muffled, and he's speaking. He's speaking now half German and half English, and he says, then she's sehen Sie später, which is see you later, and all of that. I asked him, you know, because मेरे suspicions तो वो हो गए थे सारे कि अच्छा, you know, he's using random phrases and throwing them around and recycling them. But beach mein, there are so many moments where it seems like he's very fluent. For example, whoever that gentleman is, जो कि नजर भी आ रहे हैं so screen के ऊपर, at some point ये जब अपनी सारी वो कर लेते हैं, you know, अपनी सारा drama कर लेते हैं, so he, you know, grabs his hand and then he says something. He makes a joke supposedly and everybody laughs. So I was like, what is that joke that he laughed? You know, everyone laughed at, and I was kind of impressed. I was like, ठीक है, you know, ये जो हमारा Mr. Bean है, इसको इतनी German तो आती है कि, you know, इसने joke मारा तो ये समझ भी लिया. So he said, no. The guy said, ich habe Ihnen gern. Never mind, I don't have to say the whole thing. But what he basically said was, I have promised you happily to come to Pakistan. I have come for the first time, but it is not the last time. That's what he says towards the end. ये जो है, you know, I don't want to call him Prime Minister. ये हमारा जोकर जो है, he made this big, you know, the big laugh that he did, that was just to show कि मुझे समझ आ रही है क्या. The guy says, it's stupid to laugh on this. He probably did not understand what he was saying, so he laughed to fake that he understood. So I found this the funniest because when you watch it, like obviously अगर आप किसी को इतना बड़ा कहका मारेंगे किसी के आगे तो अगला बंदा भी हंसेगा, and then they're diplomats, they're very trained to just like not, you know, sort of go with the flow. And but you know, so he's just said कि, you know, I promised that I would come. तो मैंने वादा किया था तो मैं आया हूँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन आखिरी बार नहीं आया. You know, which is sort of like just a nice parting thing. And this guy just let out this huge laugh as if देखो हम कितना आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और हमें सब समझ आ रहा है. मुझे कुछ ऐसे याद आ रहे हैं इस तरह पुरानी फिल्मों के सीन इस तरह के जहाँ पे लोग अंग्रेजी बोलने की कोई, you know, it's a scene out of like an old comedy movie. फिर so I asked him कि वो वापसी में क्या कह रहा है. तो he said कि क्योंकि फिर, you know, जो है शहबाज शरीफ वो वापस हंसने के बाद उससे वापस वो कहते हैं, तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं vielen Dank wie Licht in Zuid Monaten ich bin something, yeah. So instead of saying you are more than welcome or something like that, he says many thanks, maybe in second month I am, then he forgets the word, used some English words which I can't understand, but he says this is A1 level German, I would fail him if even in A1 if he was taking exam. तो अच्छा एक इब्राहिम, वो जब आई होप के जब वो खातून का जिसका तकरीबन 1 मिनट तक इसने हाथ पकड़ के रखा है, उस वक्त उसने वो पीनस वाला वर्ड if you play it back, no, I think वहीं पे कहीं है ये. Wow. अच्छा इब्राहिम, मुझे आप ये बताएं कि ऑब्वियसली ये जो सारी हरकतें हैं प्राइम मिनिस्टर ने इनको इम्प्रेस करने के लिए की है ना, ऑब्वियसली, राइट? इम्प्रेस करने के लिए की होंगी, लेकिन आपके ख्याल में वो इम्प्रेस हुए हैं या फिर ये इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपके ख्याल में वो क्या सोच रहे होंगे? क्या उनके दिमाग में होगी बात? I have multiple thoughts on it. एक तो मेरा थॉट ये है कि, you know, मुझे भी ऐसा लगता था कि इमरान खान जो है वो लोगों के ऐसे ही नाम और छेड़ बनाते हैं जिस तरह इनका शोबाज बनाया है. पर अभी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि वो बहुत सोच समझ के नाम रखते हैं शायद, क्योंकि that's what it is. He's a performer, you know. ये इनको, and I'm not saying this in any sort of like you know, sarcastic kind of way. I don't think that I'm saying it like that. I think इनके उसमें है
you know, performing arts is sort of like in his blood. Like he should have been a performer. You know, he likes to sing. He likes to dress up. कभी एक Daniel Craig के suit copy करते हैं, कभी hats पहनते हैं. Shehbaz Sharif is all about the performance. You know, he wherever he goes, like he knows कि अच्छा मैं इस तरह का scene. And the thing is कि यहाँ पे भी like he fooled me a little bit as well, because you know the way that he's laughing, and I was like, in some places, you know, he's saying random phrases, लेकिन कुछ जगहों में तो ये actually fluent conversation कर रहा है. I think इसको थोड़ी बहुत German आती है, but it turned out that it is all as well. He does know a little bit. He does know इतनी performance के लिए जितनी आनी चाहिए. यार आपके ख्याल में एक मेरा थॉट ये है, दूसरा मेरा थॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो जो भी सोच के गए होंगे, यही सोच के गए होंगे ना कि ये बंदा थोड़ा फनी है या एक्सेंट्रिक है या क्लाउन्स है, राइट? ये तो नहीं सोच के गए होंगे ना कि ये मर्डरस, दिस पर्सन इज अ मर्डरस थीफ. ये तो नहीं सोच के गए होंगे कि ये बंदा जो है इसके सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में पैसे आ जा रहे होंगे किसी और के नाम पे, और वो बंदा जो है कोर्ट में पेश होने के बजाय कितने साल गायब रहा होगा और एंड में मर गया होगा, और केस में नहीं. एटलीस्ट ये इंप्रेशन तो नहीं दे रहा ना. So once again, I mean, your audience is going to hate it, but I think, you know, whatever he's doing is working out at some level. We're laughing at him. No, we don't know. We don't know if it's working out or not. असल में तो वो हमें impress करने के लिए नहीं किए, ये ऑडियंस को नहीं करने के लिए किए, ये उसने उनको impress करने की कोशिश की है. और मुझे नहीं लगता है कि वो impress हुए होंगे, वो बल्कि हंस रहे होंगे कि ये क्या हरकतें कर रहा है, यानी कि इसने वो खातून का हाथ शेक पकड़ा हुआ है और पकड़ के रखा हुआ है, और आई गेस कि उसने वहां पे वो वर्ड भी अटर कर दिया है. नहीं, पर मुझे ये मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जब यू नो फ्रॉम आप एक्सीडेंटली ये वर्ड अगर आप बुक कर रहे हैं तो आई एम जस्ट वंडरिंग वेयर मिस्टर शहबाज शरीफ इज लर्निंग हिज जर्मन फ्रॉम. अच्छा, आपने एक और आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की, आपने कहा कि ये शहबाज शरीफ हैं, वो एक परफॉर्मर हैं, वो कभी कुछ ड्रेस करके आ जाते हैं, कभी कुछ. तो आपके ख्याल में ये सब कुछ खुद ही अपने दिमाग से सोच के करते हैं, या कि आपके ख्याल में उन्होंने कोई बंदा स्पेशलिस्ट रखा हुआ होगा जो कि उनको आइडियाज देता होगा कि तबाही मच जानी है, मियां साहब तबाही मच जानी है, एक कपड़े पा ले हो, लोग पीछे पीछे मुड़ के खड़े हैं. इतना तो क्रेडिट दें, यू नो, इतना तो देख रहे थे, इनकी अपनी क्रिएटिविटी है सारी. Yeah, I just feel like, you know, when you listen to him, he doesn't seem like a very smart guy. और फिर उसके बाद जो है ना, देखिए ये वाली जो हरकतें हैं ना, अगेन ये वाली हरकतें पाकिस्तान में डेफिनेटली होती हैं. यानी कि पाकिस्तान में आपको कोई भी बंदा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा. हर बंदा जो है ना वो दूसरे को उल्लू बना के जो है ना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा होता है, राइट? तो ऑब्वियसली ये डेफिनेटली इस आर्ट को इन्होंने परफेक्शन दी है, और ये इस लेवल के ऊपर तो पहुंच चुके हैं कि जी, यू नो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लोगों को उल्लू बना के. अब इनकी वो अलग बात है कि इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बिल्कुल ही 10% से भी नीचे है, स्पेशली शहबाज शरीफ की, यू नो, क्योंकि ये जब से ये पावर में आए हैं, पहले बेहतर थी लेकिन अब पावर में आए तो अब तो बिल्कुल ही कंप्लीटली एक्सपोज हो गए ये. I'm also one. मुझे बड़ा अजीब लगा कि what a thing to boast about कि you know this is 100-year-old bag. I don't know what they're doing in Nathia Gali in the first place. 100-year-old, और ये कोई पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये अंग्रेजों ने बना के हमें दिया है. British ने बनाया, but he says very well preserved, which again, this is KP sir, like, you know, you had nothing to do with preserving this. नहीं, maybe इब्राहिम, maybe शायद उनको बता रही हूँ कि यार ये तुमने हमें ये दी थी, हमें देखो हमने तुम्हारी चीजों का कितना ख्याल रखा हुआ है. और दो या बट ये पहले भी यही करते थे ना, मरी शरी जाके तो वहां जहाज से हलवा पूड़ियां और निहारियां मंगवाते थे. ये अब इनकी इंटरनेशनल वो जो है वो भी पता नहीं, for some reason there nothing. It looks beautiful. I mean, the weather's amazing. Like they're really living it. लेकिन sad state of affairs, my friend. Sad state of affairs. You know, one thing that I want to say is ये जो लास्ट गवर्नमेंट वो हुई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ टॉपल हुई थी जब, तो what year was that? 22 था वो. Yeah. You know, so even when it happened, I know a lot of my friends, a lot of people feel very, very passionately about, you know, Imran Khan and PTI, and they no one else is acceptable, you know, to them. I was bummed out about the kind of people that were, you know, honestly speaking, like if there were some competent people, you know, if that government had been toppled and some competent people had been brought on board, like a competent prime minister, a competent finance minister, I would not have been particularly upset. I would have been like, okay, country's in good hands, and you know, अगले election में देखा जाएगा कि क्या होगा. But the thing is कि, you know, इस तरह की comedy करना, and then, you know, making a joke out of this country, and then you're both in on it. These people are laughing all the way to the bank. You know,
the powers that be, like, they get to put us in this box कि oh yaar, Pakistan ka to, it's a comedy show, it's a shit show, iska to kuch nahi ho sakta. And then they cooperate with these kind of people and bring them into power. ये भी खुश हैं, वो खुश हैं, इनको एक डिब्बे में इसी तरह के लोगों को सामने लाके और फिर हम पे ये लेबल लगा के कि ये तो इनकॉम्पिटेंट और मतलब इनकॉम्पिटेंट करप्ट और पूरी कौम ही इनकॉम्पिटेंट है इनके मुताबिक। हाँ, ये तो 2 नंबर से लोग हैं ये, मतलब ये कुछ इनका कुछ हो नहीं सकता ये। व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट? जब मेरिट ही नहीं है आपके कंट्री के अंदर तो फिर यही होना है। एनीवेज इब्राहिम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेट्स जस्ट wrap this up and yeah, I have to bring a little bit of sadness into this comedy. That's the reality check.